welcome Anjana. So we are here to discuss something very important for the media landscape today, which is misinformation. So since morning, we have been hearing a lot about credibility, trust, news noise, and misinformation. I want to understand from you, how do you perceive today's media landscape as with respect to this misinformation buzzword? How much do you think it's prevalent in today's media landscape? Hi everyone. So I think it's the biggest challenge that the media industry faces today. I would like to put my answer in 3 different categories. The first begins with the fact that apart from mainstream media, social media is huge now. It's on our keyboard, it's in our fingers, like so many of you are even now glued to your mobiles. It keeps us, this habit of, I just got hold of a magazine, jo hamara bazaar magazine hai, and I liked something, and I almost enlarged the image. That's how addicted we are to our mobile phones. So what does that speak about us? That says that we are ready to believe, see, and probably indulge in everything that's coming onto our hands via the mobile. So I think media faces a huge challenge because of the social media onslaught. I call it onslaught on purpose, because I feel that there are some very good parts to it, like everybody has a voice, but also a lot of propaganda and misinformation is being spread via that media. Now, how do we counter it, and what is misinformation? We should first understand what is misinformation. Any information that is not based on facts is definitely misinformation, but is holding the other part of the truth and just putting forth one side of the truth misinformation? I think it is. Any information, at least in the media industry, if it purposely holds back one side of the truth, is misinformation according to me. चाहे वो कोई murder हो, चाहे वो भ्रष्टाचार का मामला हो, चाहे वो इस देश की न्यायालयों का मामला हो, अगर एक तरफ की सच्चाई को कोई भी मीडिया हाउस छिपाता है या दबाता है और एक तरफ की सच्चाई को पुरजोर तरीके से रखता है, तो वो भी मिस इन्फॉर्मेशन है. कई बार हम लोग इसको समझ नहीं पाते हैं. इसीलिए मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है, और ख़ास तौर पर जिस मीडिया हाउस के साथ मैं काम कर रही हूँ, आज तक इंडिया टुडे ग्रुप, चाहे वो मर्डर से रिलेटेड इशू हो, क्योंकि मुझे याद है सुशांत सिंह राजपूत में हर कोई एक तरह की भाषा बोल रहा था, तब भी प्रेजेंटिंग बोथ साइड्स ऑफ द स्टोरी इज आवर जॉब. इट इज आवर, ये हमारा काम है. और कोई भी अगर आपको इसके लिए जज करके आपको पुल डाउन करता है, तो बी रेडी टू फेस इट. ये आपका काम है भाई, उसको मत भूलिए. दोनों हिस्से आपको दिखाने ही दिखाने हैं. आपको इधर भी सवाल वैसे पूछने, उधर के भी पूछने. जब उधर पूछेंगे तो वो गाली देंगे, जब इधर पूछेंगे तो वो गाली देंगे. तो दूसरा हिस्सा ये है मिस इन्फॉर्मेशन का, जो मैं सबसे बड़ा थ्रेट मानती हूँ, वो यही है. और कई सारे तो मीडिया हाउसेस के अलावा यूट्यूबर्स हैं जो आजकल बहुत बड़े हो गए हैं, तो उनके ऊपर तो कोई अंकुश भी नहीं है. वो मेन स्ट्रीम मीडिया को गाली देते हैं, लेकिन आप उनके थंबनेल्स देखिए. क्लिकबेट्स होते हैं, थंबनेल्स तो होते ही नहीं है यूट्यूब पे. क्लिकबेट्स होते हैं, दुनिया पिघल रही है, दुनिया खत्म हो रही है, या वन साइडेड स्टोरी. और फिर आप जैसे जैसे वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाता है कि अगर वो मेन स्ट्रीम मीडिया को पुल डाउन कर रहे हैं तो उसके पीछे की वजह क्या है. तीसरा, मिस इन्फॉर्मेशन और मीडिया के क्षेत्र में मुझे लगता है सबसे बड़ी चुनौती, द बिगेस्ट चैलेंज इज दैट देयर इज अ वेरी वेल डिजाइंड मशीनरी एट वर्क टू डिस्क्रेडिट मीडिया राइट नाउ. पूरे अगर आप देखेंगे समाज में भी, शायद मैं ये ऐसा कह सकती हूँ, क्योंकि कई लोग, बस अभी हाल में मैं आपको बताती हूँ मेरे साथ क्या हुआ. कोई सडन खबर थी, मुझे खबर याद नहीं आ रही है, बट वॉट एवर इट वॉज, आई हैड 4 स्पीकर्स विद मी. सो यू नो, आज तक इज वेरी प्रॉम्प्ट. 4 गेस्ट तुरंत दे दिए, ऐसे धड़ाधड़ 4 गेस्ट है मैम, शुरू हो जाइए. तो 2 गेस्ट के बीच में यूजुअली बीजेपी एंड कांग्रेस वर एट लॉगर हेड, सो आई डिडंट वांट टू गो टू द अदर गेस्ट बिकॉज आई वांटेड अ प्रॉपर डिबेट बिटवीन देम.
तो वो 2 गेस्ट बचे हुए थे. अच्छा, पीसीआर ने बोलना शुरू किया, टाइम खत्म हो गया. तो मैं ऑनर ही थी और मैंने उसको बोला कि मैंने कहा 2 गेस्ट अभी बोल नहीं पाए हैं. और उस समय इंसिडेंटली आलोक शर्मा अपनी बात कह रहे थे और वो प्रधानमंत्री को घेर रहे थे. अब वो मेरा इशारा करके अभी तक वीडियो चल रहा है कि मैंने इशारा किया पीसीआर को कि आलोक शर्मा की आवाज बंद करो क्योंकि वो प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ बोल रहे थे. अब दैट इज अ मिस इन्फॉर्मेशन. सो ईदर आई गो बैक टेलिंग एवरीवन, आई डू अ ट्वीट एवरी मॉर्निंग, इवनिंग, lunch, I was not doing this, I was doing this, or I just let it be. But then that misinformation is spreading via a lot of media, from Instagram posts. So there was this very famous music director, I don't want to name him, he also put it on his story. So then I wrote to him what had happened. He said, okay, I'm deleting it. But then knowingly, unknowingly, people with more followers, less followers, are known, so even part of society, different parts of society, without verifying the information, I don't like her. She's bold, she's rude. इतना चिल्लाती है औरत होके. Like we've also probably we've made boxes in which we want our journalists to fit. Men can be decisive, they can be outspoken, they can be rude. I like him, he's so arrogant. Wow. And if a woman chooses to even be anything beyond kind, nice, humble, very polite, very space-giving, then she's questioned for that very behavior. So I think there are a lot of challenges that we need to face. And it's not been an easy journey. I started long back, as I keep talking, कि एक ज़माना ऐसा था जब हम लोग कर रहे थे, तो women were already considered just for, you know, the second half of the bulletin when we were running light news or the soft news. वहाँ से लेके इलेक्शन हार्डकोर न्यूज़ करना, फाइटिंग पीपल एवरी डे, नॉट दैट इट्स वेरी enjoyable. I'm trying every day to bring in a little more humor to politics and trying to make my shows more interactive and interesting. I tell my speakers, spokespersons from different parties also to add a little humor, because I think that the screeching and the noise takes us nowhere. But then these are 3 big challenges. So the first challenge is what is misinformation? Withholding one side of the information is a huge challenge. Then social media and the various platforms. WhatsApp है, आपने 100 लोगों को एक ग्रुप पे कुछ भेज दिया. मेरे परिवार में कितने लोग हैं जो मुझे कुछ भेजते हैं, ये देखो ऐसा हो रहा है. And I know it's false news, but they are not ready to believe me. तो कहते हैं कि अरे मैंने देखा है, इंस्टा पे था. इंस्टा कब से सही हो गया? अरे व्हाट्सएप पे भी आया था, फेसबुक पे भी देखा है मैंने. मैं कहा हर जगह झूठ फैल रहा था, आपको पता नहीं चला. So that's the challenge we face. And the third is this, that you know, everybody is playing a part in discrediting media. And I think it's very important कि मीडिया के लोगों को एकजुट होना ज़रूरी है, कि हम सब ये समझें और हर कोई थोड़ा सा, you know, when you go back, just think, was I okay today? It's okay, it's okay. We can have, like, we're just human beings. कभी भी आपको लगता है कि ऐसा मैंने शायद गलत किया, मैंने शायद वो पोजीशन ले ली जो मेरी आइडियोलॉजी है, मुझे उधर भी ऐसा करना चाहिए था. Make amends the next day. We all need to rethink and not think that we are gods. I have seen so many media people who think they're gods. And I've seen those gods fall also. So the day a media person thinks he is God, then also I think he falls into a trap. And we are not gods. We are just like the guy who serves you tea in office, you're just an employee. Come there, use your brain, do a nice job, go home, sleep well, spend time with your family. But beyond that, you're not gods. You're not gods, you're humans. Very, very well said, Anjana. I mean, there are a lot of points that we can pick from here for the audience, because we have a lot of young people in the audience as well. And one pertinent question here. So I was at an ad agency party, and I had heard from a very senior official there that media is sort of forgetting the line between sensationalism, the sansani, and misinformation. So do you think that line is getting blurred, and the hunger for this sansani and sensationalism is sort of feeding the misinformation? Who was this gentleman you were talking to? I can't name, but there was a very senior official. Tell us his profession at least. He's in advertising. He's in advertising. Oh wow, an advertising guy telling us that media people are looking for sensation. But I think you probably talked to him in the wrong time, because if he would have said this 10 years back, then probably I would have
countered it, or I would have said that, not countered it, I would have accepted it and been more humble. But I think that post the Anna Andolan, media has by and large, or largely if we can say, been focused on news and politics and elections, and the viewers are also watching that. They're really hungry for news, which is a great thing for us. So I think the sensationalism has gone down quite a bit, a few notches for sure, but I can't tell you that, yeah, it's completely gone. That's something that we need to continuously work on, yeah. Okay. And Anjana, also you mentioned how you've been in the industry for a while now, right? And when you joined, can you give us a picture of how fact-checking was done then versus how fact-checking is done now, right? How has the landscape there changed? So now we have fact-checking teams in offices. That's the kind of challenge we face. We never had fact-checking teams because your reporters were your fact-checkers. But now, because so much of misinformation, अब तो मेरे वीडियो चल रहे हैं, मैं घुटनों के दर्द का भी दवा बेच रही हूँ AI में, और मैं डायबिटीज़ की भी दवा बेच रही हूँ AI versions में. So how do you counter that? You need fact-checking teams for that. So the biggest first difference is that तब fact-checking teams नहीं होती थी, अब fact-checking teams हैं. So that is the kind of कितना बड़ा ये issue हो चुका है, उसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं. दूसरा, ये बात सच है, और आज तक में मैं आपको बताती हूँ, हमारे जो एडिटर इन चीफ हैं मिस्टर अरुण पुरी, उनका एक इंस्ट्रक्शन और उनकी एक लाइन बहुत अच्छी लगती है, जो मुझे लगता है हर मीडिया हाउस को याद रखनी चाहिए. जब भी वो कोई भी स्टोरी देखते थे जिसको कोई रिपोर्टर ओन नहीं करता है, लाइक यू डोंट हैव अ रिपोर्टर PTC टू इट, ही वुड से whose story is this, and then he would ask questions, whose story, कैसे ये स्टोरी बनाई आपने. So make a reporter accountable for every story that you're running. तो उससे वो फैक्ट चेकिंग खुद ही हो जाती है कि एक ह्यूमन के ऊपर अकाउंटेबिलिटी आ गई भाई, अब उसके माथे पे है, उसके सिर पे है. अगर ये खबर गलत निकली या इसमें लिखी हुई एक भी लाइन गलत हुई तो वो उसके माथे पे है. तो जब अपनी नौकरी पे आती है तो हम सबको चिंता होती है, तो फिर उसी तरह से प्रोपोर्शन में फैक्ट चेकिंग होता है. तो अब उस तरीके से उसको आप हैंडल करते हैं. पहले इतना नहीं था, मुझे लगता है कि पहले खबरों को लेकर एक तो उतनी ज़्यादा तेज़ी भी नहीं थी या उतना ज़्यादा मीडिया हाउसेस भी नहीं थे. अब तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं नेशनल, उतनी मीडिया हाउसेस हो जाएंगी. तो देयर इज़ अ रेस गोइंग ऑन, बट हाँ, वो चैलेंजेस पहले उतने नहीं थे, अब बहुत ज़्यादा है. टाइम भी इतना इवॉल्व हो गया है. बट अगेन अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट यू मेंशन, जहाँ पे हमारी फैमिलीज को भी हमने देखा है कि अरे व्हाट्सएप पे देख लिया, इंस्टा पे देख लिया, मतलब खबर सच है. So, as a person who has been in the industry and as an expert in this industry, what would you advise to common people to believe in a news? What should they look for in a news to believe that ये सच है और randomly इंस्टा पे आई हुई चीज़ नहीं है? I think एक तो source, कि किसने वो खबर डाली है. And you have to build your pool of credible channels, media sources, individuals that you trust. बिकॉज आजकल ओपिनियन ज़्यादा है, फैक्ट्स कम है. बट जब भी आप न्यूज़ कंज्यूम करें तो आप आज तक देखें. Nice. So choose your media house very, very carefully. Whom are you going to trust? That is the best way, because, and all the media houses which have credible reporters or faces who are, taking accountability for that news are usually the ones who will put forth the best facts for you. Superb. And as we are closing in and the timer is ticking, I have one last question for you. Anjana, since morning, a lot of people have mentioned the need for a regulatory body to hold, like you said, a reporter needs to be held accountable for this story. A lot of people mentioned about an industry body being there to hold the media outlets accountable for the stories they are putting out. Do you feel that is a need in today's time of misinformation, an industry body? I think there are broadcasters associations and etc. which take care of following regulations, and if anything is going too berserk. I say a complete no to any governmental regulation for sure, because I think that will only be, that is not welcome at all. But within the media, if people think that they need such a body, then why not? I mean, we already have such bodies existing. And I think each one has to be accountable. We have to just remember who we are. We are not here. Our job is in one line, to put both parts of the story in front. हमारा पूरा काम बस यही है कि आपको हर स्टोरी के दोनों हिस्से बताने हैं.
जो भी स्टोरी आपका फिल्टर अपने दिमाग का अलग हो सकता है, उनका फिल्टर अलग हो सकता है, उनका फिल्टर अलग हो सकता है, आपको एक खबर अच्छी लग सकती है, इंपॉर्टेंट लग सकती है, उनको नहीं लग सकती है, लेकिन जब भी आप वो खबर दिखाएं, प्लीज टेल बोथ साइड्स ऑफ द स्टोरी। जब भी आप अपनी चूज की हुई खबर दिखाएं, प्लीज टेल बोथ, सो दैट फिल्टर वी हैव टू बिल्ड। इफ वी आर गुड विद दैट फिल्टर, देन आई डोंट थिंक वी नीड, एंड फिर ऊपर से एसोसिएशन से डाली हुई कोई भी बात, प्रेजुडिसेस, बायसेस, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आएंगे। आई थिंक मीडिया हाउसेस एंड इंडिविजुअल्स हैव टू लुक विद इन देमसेल्व्स. That's the best way forward according to me.